तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। चलिए आज देखते हैं हम आज का एडिटोरियल क्या आया हुआ है। फर्स्ट आर्टिकल वी हैव ग्रीन ओवर ब्राउन, ये क्लाइमेट के रिगार्डिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है ईस्टर्न डिस्क्वाइट, ये पॉलिटिकल इंक्लाइंड है, वी विल नॉट डिस्कस हेयर। देखिए अब ये आर्टिकल हमारा देख लेते हैं। फायरिंग ए वार्निंग शूट अक्रॉस बिग टेक बोर्ड्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल करता है आपकी लाइफ के लिए, ये आप इसको रीडिंग के लिए यूज कीजिएगा, दिस इज़ योर होमवर्क। सेकंड आर्टिकल आपका कन्वर्जेंस ऑफ एग्रेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया, ये आर्टिकल आपका फार्मर्स के रिगार्डिंग है, आप इसको रीडिंग के लिए ले सकते हो, ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट पेज पे इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा, इंडिया को ज़रूरत है रीथिंक मतलब सोचने की, न्यूट्रिशन के बारे में एजेंडा। ओके, वी विल डिस्कस 80 वर्ड पर मिनट्स। ओके, फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम, ये आपका 100 वर्ड पर मिनट्स होगा। चलिए हम अपनी डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। बी रेडी, स्टार्ट। इंडिया असर्टेड एट द वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट को कन्वेंटेड बाय द UN to mark 5 years of the Paris Agreement that it is well on its way to not just fulfilling its national pledge on emissions reduction but exceeding the commitment. The performance outlined by the Prime Minister Narendra Modi rests primarily on the estimated present reduction of emissions intensity by 21% over 2005 levels. The goal is between 33% and 35% of GDP by 2030, and the twin pillars of renewable energy and higher forest over full stop. Ended the emissions gap report 2020 of the UNEP includes India among 9 G20 members who are on track to achieve their unconditional commitments under the Paris Pact based on pre-COVID-19 projections. Significantly, the G20 bloc as a whole, responsible for 78% of greenhouse gas emissions, was not expected to meet its pledges, but some countries and the EU as a group announced higher ambition at the summit. The brief reduction in global GHG emissions brought about by the pandemic has given all countries an opportunity to review their development trajectories. The unprecedented event has enabled them to deploy an extraordinary fiscal stimulus for rehabilitation of economies estimated at $12 trillion globally, making green growth impossibility. India faces a particular challenge in moving its pandemic rehabilitation spending away from traditional brown sector policies aligned with fossil fuel used to green territory. At the recent summit, Mr. Modi took credit for expansion of forests, which according to the national pledge under the Paris Agreement will serve as a carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030. This is a key goal given that it has multiple benefits: protecting biodiversity, influencing the climate system, and providing resources for communities. But it is fraught with uncertainty. The sender
has questioned the veracity of state afforestation data and said only a fourth of the claims and they made were deemed credible. Clearly, without a cohesive policy on verifiable afforestation, the carbon sink approach may yield poor dividends with questions hanging over the spending. Achieving 100 gigawatts of solar power capacity within the overall renewables goal from 36 GW now needs a setup steep scale up that must activity promote rooftop solar installation. There is a little evidence that this is a high priority for most states. Transport related emissions, which are a major component of the whole, have risen sharply in the unlock phase of the pandemic as people prefer personal vehicles, but the issue received little support from states which failed to recover cities for cycling and pedestrianization. Full stop. Large scale agriculture in insurance against climate disasters also needs attention. In the year that remains before countries meet at the UN Climate Change Conference in Glasgow in 2021, India needs to focus on future emissions and plan green investments that qualify for global climate funding. फुल स्टॉप। ये आपकी 460 वर्ड हैं और 100 से अबाव थोड़ी सी स्पीड आपकी। इसको आप लिखिए अपनी कॉपी में, लिखने के बाद इसको टाइप ज़रूर कीजिए। जब तक आप टाइप नहीं करेंगे आपको नहीं पता चल जाएगा कि इसमें हमारी मिस्टेक है। अगर आप इसको रीडिंग करने में 10 मिस्टेक करते हो तो आपकी जो टाइप करने में मिस्टेक होगी कम से कम 20 और 25 के अराउंड होगी। ठीक है, आप इसको रीडिंग मत कीजिए, आप इसको